Hey guys, welcome to my YouTube channel and today's unboxing video of zedling suspension. So मेरे पास KTM 390 adventure sports bike. I will not say it's a sport bike, yeah it's adventure bike from the KTM. So जैसा कि सब लोगों को मालूम है या फिर जो भी KTM adventure के ओनर हैं, they all know, and if they are not the owner then I will make sure that they know that KTM Adventure 390 की जो सस्पेंशन है they are very stable. So आप अगर रोड पे चल रहे हो या फिर एकदम से कोई गड्ढा आ जाता है, so you are not going to feel that the suspension is working. तो आपको एकदम झटका लगने वाला है एंड लिटरली वो झटका आपकी कमर को तोड़ देगा. तो मार्क माई वर्ड कि वो आपकी कमर को लिटरली इफेक्ट करेगा. सो आफ्टर सम किलोमीटर्स ऑफ द राइडिंग यू विल बी हैविंग द बैक पेन. ओके, सो या आई एम नॉट सेइंग दैट द सस्पेंशन डजंट वर्क, बट द सस्पेंशन डू वर्क इफ द सरफेस इज इवन एंड इट्स नॉट दैट इवन. मतलब आप समझे नहीं होंगे मेरे कहने का मतलब. लेट्स से यू हैव दिस प्लेन रोड. ओके, नाउ if the road is going like this and it's going the curve like this, then the suspension is going to work. But if like let's say the road is like this going straight and then you have this dump, so the suspension is not going to work over that and you will have to get a serious injuries over there. Okay, so इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर I have rode my bike for almost 15,000 kilometers as of now. So वो मेरा ट्रेवल मोस्टली आई लिव इन मुंबई itself. So मुंबई टू लोनावला, मुंबई टू मालसेज घाट रहा, या फिर इट्स लाइक मुंबई में बहुत सारे जो डेस्टिनेशन होते हैं जहाँ पर राइडर्स नॉर्मली जाते हैं, तो उधर जाने का है. ओके, सो मैं मोस्टली अपना बाइक राइड करता हूँ फ्रॉम माई होम स्टे टू ऑफिस and from office back to home. So after riding 1500 kilometers I am going to change the stock suspension to the custom suspension which is the zedling suspension. So आप पूछोगे कि मतलब एक साल बाद आपको ऐसा क्यों फील हुआ. फर्स्ट अभी मैं एक्चुअली ऐसा था कि कुछ झेल रहा था. मैंने अपना सर्विस आई थिंक सो जब मैंने अपना फर्स्ट सर्विस करवाया था तो जो स्टॉक सस्पेंशन था उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. तो आई गॉट इट चेंज फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पैनी. बट आफ्टर 3 to 4 months those suspension also gave up. So I have to change it today because after 2 days I won't be having my bike with me because I have to transport it to Chandigarh for a ride to Ladakh. Okay, so you know कि अब आपको लद्दाख जाना है, सो आपको बाइक में सब कुछ एकदम फिट चाहिए, ओके चाहिए, एंड द सस्पेंशन इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दैट. ओके, सो दैट इज़ माई स्टोरी फॉर चेंजिंग द zedling टू सस्पेंशन. सो लेट्स अराइव एट द अनबॉक्सिंग. सो इसका जो पैकिंग था बहुत अच्छा था, बबल रैप था, पूरा अच्छे तरीके से बबल रैप था ये zedling सस्पेंशंस. सो मैंने बबल रैपिंग निकाल दिया है. सो बाहर का केवल जो वन साइडेड टेप है वो बाकी है, बट द पैकिंग वाज गुड. सो प्लीज़ डोंट टेक इनटू दिस वीडियो कि पैकिंग इतना ख़राब है. पैकिंग बहुत अच्छा था. ओके, सो लेट्स गो फॉर द अनबॉक्सिंग. या एज यू कैन सी फ्रॉम द zedling suspension, Pimpri Chinchwad, Maharashtra. Okay, so you can see the phone number over here. So in the case you want to contact them and get the suspension work out according to your need, then please go for them. So जैसा कि इन्होंने इधर मेंशन किया है ATVs टूरिंग्स के लिए दे मॉडिफाइड सस्पेंशंस. ओके, और इसमें आप देख सकते हो कि बेटर ये इनके सस्पेंशन का एडवांटेज है, तो वो क्लेम करते हैं. सो एक्चुअली वी डोंट नो कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है. सो एक बार राइड कर लेंगे बाइक को, फॉर एग्जांपल से 500 किलोमीटर, देन वी विल कम टू नो एंड आई विल मेक द डिटेल रिव्यू ओवर देयर आफ्टर राइडिंग द बाइक फॉर द 500 किलोमीटर्स. ओके, सो बैटर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एड्रेस टाइम एंड द स्क्वाड इश्यूज है, एंड दिस इज अगेन देयर एड्रेस. सो कुछ ज़्यादा है नहीं है बॉक्स पे. इट्स बैजिंग ऑल ओवर द बॉक्स. ओके,
So let's go for the unboxing. So let's cut the first step over here. So ये हो गया है and so जैसा कि हम देख सकते हैं there are two suspensions. So one is the spring load only and the one is the full suspension, which is this suspension. Oh my god, this is so heavy. Literally it's so heavy. I think it's weight around 15 kgs. Yeah, maybe I'm wrong, but yes, I do the gym and I know what the weight it's having. So it's 15 kg, I think so. So what the zedling does, वो आपसे बोलते हैं कि अपने बाइक की स्टॉक सस्पेंशन हमें भेजिए and then they modify it according to your needs, according to your weight. They take your weight, they take your height, they get the information about what's the condition on the road you ride, whether you do adventure, whether you are off-roading, या फिर आपका नॉर्मल राइड है, हाईवे पे राइड करते हो, सामान कितना लेते हो, आपका पिलियन आपके साथ है या नहीं. सो दैट ऑल द डाटा दे टेक विद देम एंड दे मॉडिफाई द सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू द डाटा यू गेट देम. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ वो पहले सबसे पहले KTM से अपना एक जो स्टॉक सस्पेंशन होते हैं वो ऑर्डर करते हैं एंड देन दे मेक चेंज ओवर देम. ओके, सो दिस वाज द स्टॉक सस्पेंशन दे हैव ऑर्डर एंड नाउ दे हैव completely modified it. बाहर से तो पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत पता चलता है ये, बट इंटरनल में इन्होंने इनका पिस्टन भी चेंज किया. ऊपर से यू कैन सी द स्प्रिंग हैज़ बीन चेंज्ड. सो दिस इज द स्टॉक स्प्रिंग. लेट मी जस्ट ओपन इट अप फॉर यू गाइस. This is the ये अपना स्टॉक सस्पेंशन के साथ जो स्प्रिंग आया है वो है एंड दिस इज द स्टॉक स्प्रिंग. मॉडिफाइड सस्पेंशन ओवर देयर. सो जो बेस है इसका ब्लैक वन वो सेम है, उसका इंटरनल पिस्टन है, हाइड्रोलिक प्रेशर वो इन्होंने चेंज किया होता है और बाहर से जो स्प्रिंग है वो इन्होंने थोड़ी एडजस्ट की है. सो एज यू कैन सी द लेयर ऑफ द स्प्रिंग ओवर हेयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर अपन देखे हैं स्प्रिंग का लेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 both are same, but as you can see the gapping difference is there between them. Let me just show you. So you can see कि there is a little bit of gap coming between these two. So हाँ, इससे अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो बाद में पता तो आपको बाद में ही चलेगा. एक बार आई हैव रिटर्न, एक बार आपने राइड किया 200-300 किलोमीटर्स, ओनली देन यू विल कम टू नो अबाउट इट. सो आई विल बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो of this suspension, same again saying after riding the bikes to 300 kilometers and after I am back from the Ladakh. So I am going for the ride to Ladakh for 3 days. I will be making a detailed video of the review for the suspension only after coming from the Ladakh ride. Okay, so they have done a little wedging over here just like zedling suspension. And there is nothing much of in it. Okay, so that's all for today for you guys. कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट
एंड लेट मी नो योर क्वेरीज. जितना भी मेरे से हो पाएगा आई विल बी trying to answer your queries. Okay, so thank you guys for arriving at this video, and please make sure that you subscribe, like and comment over the video so that I will be motivated to make some better videos for the next time. Okay,